So we can start. Okay. So in the previous class, we discussed number of zeros. How we can get 1 0? If we get 5 and 2 ka one pair. After then we discussed factorial concept. 5 factorial and beyond will get 0 at last digit. After then what we discussed? Ki how we can calculate number of zeros in any number ka factorial. So what we can do, if 100 factorial is there, it is asked ki how many zeros are there at the end. We can simply find out ki how many 5s are there. How we can calculate number of 5s? 100 ko will divide by 5. We'll see ki what quotient is coming. Again we'll divide this quotient ko 5 se. If we can divide, if this is less than 5, we'll say ki this is the total number of 5s. 24 number of 5s hai. That means 24 zeros will be there at the end of this number. Then also we discussed how we can calculate number of 2s, number of 3s, number of 7s. Number of 7 may be the same thing. Like 20 factorial. Number of 7s we need to calculate. What we can do? 20 को will divide by 7. Quotient is 2. तो दो ही आएगा इसमें, एक 7 पे एक 14 पे. But if it is asked calculate number of 4s, then number of 4, so 2, 5, 3, 7. These are basically prime numbers. We don't have any factors of these numbers. तो इनको बेसिकली ऐसे ही निकाल सकते हैं, सीधे 5 से डिवाइड करा, 2 से, 3 से, 7 से. बट इफ इट इज आस्क्ड कि कैलकुलेट नंबर ऑफ 4s, कैलकुलेट नंबर ऑफ 6, कैलकुलेट नंबर ऑफ 9s, कैलकुलेट नंबर ऑफ 8s, then we need to think how we can get 1 4. 4 को we can write 2 into 2. That means with the help of 2 2s we can get 1 4. If I write 10 ka factorial, how many 4s are there? So what we can do, we'll try to find out how many 2s are there. 10 factorial mein how many 2s are there? 5, then 2, then total 8. 8 2s are there. 8 2s are there. So how many 4s we can have? 4. क्योंकि 1 4, अलार्म बज गया. लंच का टाइम. किसी को चाय पे टाइम दिया होगा कि इतने टाइम पे निकलना है, मिस ना हो जाए आज. So how we can get 1 4? With the help of 2 2s. 8 2s we are getting, that means 8 by 2. Number of 4s will be 4. The same way we can calculate for 8. 8 अगर calculate करना है, number of 8s 10 factorial में, how we can get number of 8s? We'll see 8 को how we can write. 3 2s की help से we can write 1 8. So we'll try to get number of 2s. Again it is 8. 8 2s are there. So 8 2s में how many 8 we can make? 3 2 से we can get 1 8.
So 6 2s से we can get 2 8s. Further, we need 9 2s, then only we can make 3 8s. But we do have how many 2s? 8. So we cannot get more than 2 8s. Correct? थोड़ा सा इसको और समझना कि कैसे we are getting number of 2s. So this way we can write 2 into 2 into 2 into 2 8 times 3 3 3. So this is 1 8, this is another 8, but we cannot have another 8. Only 2 8s we are getting. तो क्या करेंगे? सिंपली 8 2s आ रहे, 8 को will divide by 3. We'll try to see कि what quotient we are getting. 2. Number of 8s 2. थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है. If I ask 12k factorial में how many 8s are there? What we can do? 12 को 12 में we'll try to see कि how many 2s are there? 6 3 then कितना हो गया ये? 10. 10 2s are there. 10 2s are there. How many 8s we can have? 3 2s से we are getting 1 8. तो 10 2s से 10 को 3 से डिवाइड करेंगे. ये 3 क्या है? 3 8 को if we write 2 into 2 into 2, 3 times 2 is coming. This 3 को we are dividing by 10. Quotient क्या आ गया? 3. So maximum number of 8s we can have 3. अब ये 50 फैक्टोरियल में पूछे, 100 फैक्टोरियल में पूछे, we can get answer. For 4, for 8, and what about 6? 2 into 3, that means 2 and 3 का 1 पेयर. तो वहां पे 2 भी निकालना पड़ेगा, 3 भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा. If I ask about 9, 10 फैक्टोरियल में how many 9s are there? Because this variation UPSC has not asked till now, but they have asked about 3, they have asked about 2, but they have not asked about this 4 6 8 9. इसके बारे में अभी तक नहीं पूछा. So they can ask. So we'll try to find out. अब 9s पूछ रहा है, 9 को we can write 3 into 3. That means 2 3s की हेल्प से we can have 1 9. तो 10 फैक्टोरियल में we can calculate कि how many 3s we are getting. 10 को 3 से डिवाइड करा, 3 को 3 से we are getting 1. Total 4 3s we are getting. So with the help of 4 3s, how many 9s we can have? हमने सिर्फ करना है 4 को डिवाइड किससे करना है? 1 2, काउंट 2 है. That means 2 9s we can have. लेकिन अगर 9 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा? 1. But that is not correct answer. We need to go for this. We'll calculate number of 3s. We'll calculate number of 2s. Correct. If I ask 10 factorial में how many 6 are there? So what we can do? 6 को we can write 3 into 2. So 3 and 2 का 1 पेयर से we are getting 1 6. We'll try to find out 10 factorial में how many 2s are there? 8. 10 factorial में how many 3s are there? 4. Correct. So how many pairs we can make of 2 and 3? 4 pairs. That means 4 6 are there. लेकिन अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो what we are getting? Only 1. 10 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा. But that is not correct answer. We can have 4 6. ठीक है. So this way number of zeros में mostly
So many variations we have discussed, जो कि this year they can ask. Then we can think of this. If I ask you one question, 99 का factorial. This is one expression. Y is equal to this way, 1 factorial plus 2 factorial till 99 का factorial. If I ask, what will be दूसरा appointment? What will be the last digit? What will be the last digit? Sure? Multiplication is not there. Addition is there. 2 factorial में भी 0 नहीं है. 3 में भी नहीं है. So what we can do, we can have this idea कि 5 factorial and beyond, every time we'll get 0 at a unit place. But 1 factorial में 1, 2 factorial 2, 3 factorial 6, 4 factorial में 24 का 4, है ना? And 5 factorial में unit place पे 0, 0, everywhere till 99, till 1 lakh will get 0. If we add the unit place पे क्या आएगा? 3. 3 will be our answer. 3 will be our answer. If we open 10 factorial, then we get 1 के पार 9. How to make 2 or 3 pair? Previous question से अच्छा, previous question से. I will come to that again. So this question understood by everyone? ठीक है ये? We know कि 5 factorial and beyond unit place पे will get 0 क्योंकि 5 factorial में 5 and 2 का 1 pair and beyond every number का factorial में will get 5 and 2 का 1 pair. That means unit place पे will get 0 till 99 factorial. But unit place पे we are not getting 0 for 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and 4 factorial. So we can see कि what we are getting at unit place for these terms. 1 factorial में 1, 2 factorial में 2, 3 factorial में 6, 4 factorial में 24 का 4. Then 0, 0, 0. Then we can simply add them. If we are adding, we are getting unit place पे 3. ठीक है? So this is like ये जो मैंने ऐड करा है 1 factorial की वैल्यू आई हैव पुट की 1, 2 factorial की 2, 3 factorial की 6, 4 factorial की 24. यूनिट प्लेस पे इट इज कमिंग 4. आफ्टर देन 5 factorial में यूनिट प्लेस पे इट इज कमिंग 0, 6 factorial में भी 0, 7 में भी 0 and till 99 factorial everywhere will get at unit place 0. तो we can add, अब ये एडिशन है ऐसे, तो 2 1 3 6 9 4 13 का 3 वी कैन राइट. अब यूनिट प्लेस पे इसके अलावा तो कोई नंबर आ नहीं सकता. कैरी आएगा तो इधर जाएगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेकेंड डिजिट, ओनली द लास्ट डिजिट. द आंसर विल बी 3. आंसर विल बी 3. करेक्ट. 4 का 24 कैसे हुआ? दिस इज 4 फैक्टोरियल है, दिस इज 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल को इफ वी एक्सपैंड वी कैन राइट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये कितनी वैल्यू आ गई? 24. 24. करेक्ट. सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड. ठीक है.
then if I write y is equal to 4 factorial plus 5 factorial plus 6 plus 9 9 9 का factorial, what will be the unit digit? ये तो सिंपल है ना? So we can see कि 5 factorial and beyond everywhere will get at unit place 0. 4 factorial की वैल्यू 24. So we can simply add कि 24. Then 5 factorial में unit place पे 0, 6 में 0, 7 में 0, till every number में 99 factorial तक we'll get at unit place 0. If we add, answer आ गया 4. Answer is 4. Answer is 4. ठीक है. Then 9 वाला सबको समझ में आ गया था? 9 वाले में क्या करा था हमने कि how many 9s are there? Suppose it is written 20 का factorial. 20 का factorial. How many 9s are there? Maximum. 9 को we can write कि 3 into 3 तभी we can get 9. 2 3s if we are getting, then only we can say कि 1 9 we can have. तो हमने क्या करा कि 20 factorial में we'll try to see कि how many 3s are there. 6 2 कितना आ गया 8. 8 3s are there. अब 8 3s are there in this expansion 20 का factorial में. So how many, इसको यूनिटरी मेथड से सीधे लगा सकते हैं. 2 3s से वी आर गेटिंग 1 9, तो 1 3 से 1/2 कितने हैं 3s 8. 8 3 से कितने हो जाएंगे 8 into 1/2 4 है ना. सिंपली 2 3 से 1 9, 4 से 2, 6 से 3, 8 से 4. सो आंसर विल बी 4. 4 9s are there. तो ये थोड़ा सा समझना है. नंबर्स को वी नीड टू सी कि हाउ वी आर गेटिंग 9. 9 को वी कैन राइट 3 into 3, तो हमने निकाल लिया कि हाउ मेनी 3s आर देयर. अब जितने 3s आ गए उसका हाफ कर दिया, उतने 9s आ जाएंगे है ना. कर सकते हैं ऐसा. इफ आई राइट अनदर क्वेश्चन, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. इसके आगे भी पूछता है द सेम कॉन्सेप्ट. 10 भी पूछता है 2 into 5 है ना. उसमें तो 2 and 5 के पेयर्स ही निकालने. जितने जीरोस होंगे उतने टेंस होंगे. सिंपल कि हाउ मेनी टेंस आर देयर. दिस वे यूपीएससी कैन फ्रेम दिस कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड और हाउ मेनी मैक्सिमम टेंस आर देयर. तो 10 का मतलब 1 0. जितने जीरोस आएंगे उतने टेंस होंगे उसमें. इफ आई राइट अनदर क्वेश्चन, the question is how many zeros are there at the end. So this is 2 के पावर 5 minus 2 के पावर 4 minus 2 के पावर 3 multiplied by 3 के पावर 5 minus 3 के पावर 4 minus 3 के पावर 3. 7 का कैसे निकालेंगे? 7 का तो वैसे ही निकाल लेंगे. 10 फैक्टोरियल में पूछ रहा है 7 का, तो 10 को डिवाइड करेंगे 7 से. देखेंगे क्वोशंट क्या आया 1. 1 हो गया हमारा आंसर, क्योंकि 7 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते. 7 इज अ प्राइम नंबर. कितना आ रहा है आंसर इसमें 1 आ रहा है. सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू,
अब यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, हमने प्लस वाला ही देखा था. दिस इज द फर्स्ट केस वेयर वी आर सब्सट्रैक्टिंग नंबर्स. So we can take something common out of it. We can take the first term. First term is 2 के पावर 5 minus 2 के पावर 4 minus 2 के पावर 3. What common we can have here? Smallest number is 2 के पावर 3. 2 के पावर 3 we can take common. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कॉमन लेते हैं तो दिस वे वी राइट और नॉट, कि इसको अगर ब्रैकेट हटाएंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 से कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 2 के पावर 5 ओनली. दैट मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली. माइनस 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3. नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपको आ रहा है ना. ठीक है. सो व्हाट वी कैन गेट हियर, 2 के पावर 3, यहां पे दिस इज a के पावर m, a के पावर n. तो क्या होता है इसकी वैल्यू, a के पावर m माइनस n. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 माइनस 3 2 माइनस 2 के पावर 4 माइनस 3 1 माइनस, अब सेम नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई द सेम नंबर, और 2 के पावर 3 माइनस 3 2 के पावर 0, दैट इज ऑल्सो 1. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 4 माइनस 2 माइनस 1. तो 2 के पावर 3 इंटू 4 माइनस 3 1. सो फर्स्ट टर्म के लिए वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. देन सेकेंड टर्म को वी कैन सिंप्लीफाई, 3 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 4 माइनस 3 के पावर 3. 3 के पावर 3 इफ आई टेक कॉमन, क्योंकि 3 के पावर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर. सो हियर विल गेट 3 के पावर 5 माइनस 3 2, 3 के पावर 4 माइनस 3 1, 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3 1. सो व्हाट वी आर गेटिंग, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 9 माइनस 3 माइनस 1. ये कितना आ गया, 3 के पावर 3 इंटू ये कितना आ गया 5 5. सो सेकेंड टर्म की वैल्यू वी आर गेटिंग 3 के पावर 3 इंटू 5. फर्स्ट टर्म की वैल्यू वी आर गेटिंग दिस. सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के पावर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म into 5. So how many zeros are there at the end? How many pairs we can make of 2 and 5? उसी से मिलेगा how many zeros are there. 5 is coming once and 2 is coming thrice. Pair कितना बनेगा, only one pair we can make. That means answer is 1 0. 1 0 is at the end. ठीक है, विल गेट आंसर. तो इस तरीके से इफ सम प्रॉब्लम इज गिवन, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई देम. हमने क्या करा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है एंड वी हैव सिंप्लीफाइड इट एंड गॉट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. क्योंकि हमने कैसे सीखा है, हाउ वी कैन गेट नंबर ऑफ फाइव्स एंड नंबर ऑफ टूज. अगर मल्टीप्लीकेशन है देन वी कैन काउंट कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, हाउ मेनी टूज आर देयर. सो वी हैव रिटन इन दिस फॉर्म कि this multiplied by any another number. If the same question I ask, ये लिख लिया सबने, ठीक है. डन. If another question is this way, y is equal to 2 के पावर 154 153 152.
मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर 154, 153, 152. How many zeros are there at the end? है ना? Same answer we are going to get. ठीक है. नहीं, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा. सिंपली हमने एक वेरिएशन करा, सेम वेरिएशन पे वी आर डूइंग द सेकंड क्वेश्चन. नाउ विल फील कि अब ऐसे कॉमन लेना है, देन वी आर गोइंग टू राइट दैट कि 2 के पावर 154 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 152. ऐसा तो लिखेंगे नहीं, सीधे डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट. हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म में स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 के पावर 152. विल टेक 2 के पावर 152 एज कॉमन. तो 154 minus 152, what we are getting? 2 के पावर 2 minus 2 के पावर 1 minus 1. So this is 2 के पावर 152 minus 4 minus 3, that is 1. This is the first term की value. Then second term 3 के पावर 154. We can take 3 के पावर 152 common. Here 3 के पावर 2 minus 3 के पावर 1 minus 1. What we are getting? 3 के पावर 152 into 5. This is the second term. And y is equal to first term into second term into 1 into 3 के पावर 152 into 5 के पावर 1. How many pairs we can make? 5 and 2 का? 1 pair. 1 pair. That means 1 0 at the end. है ना? दिस इज द शॉर्टर वे वी कैन से. अब इससे ज्यादा छोटा कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, ठीक है, ऐसे मिल रहा है आइडिया. अगर सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, देन विल ट्राई टू मेक इट राइट इन दिस फॉर्म कि फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. दिस वे वी कैन गेट आंसर. ठीक है, लिख लिया सबने? So number of zeros में we have seen so many variations and how UPSC has asked questions and how in future UPSC can ask questions. Then we can check for this 2-digit number and 3-digit number. So basic idea will get, and after then we'll discuss few basic questions. Then we'll switch to divisibility rule, और ये 2-digit and 3-digit number will come after then also. So if I ask how many 2-digit numbers are there? Two-digit number starts from 10 से start होती है till 99. So how many 2-digit numbers are there? 90 के 89? 10 is also included. ऐसे करेंगे ना, 99 minus 10 we are getting 89. But 10 is also included, तो +1 करना पड़ेगा. Total 90. 2-digit numbers are there. 2-digit numbers are there. You know what is place value and what is face value? If I write a number 25, 5 की face value है ना, जो दिख रहा है वही है. 5 दिख रहा है, 5 है फेस वैल्यू इसकी. 2 दिख रहा है, 2 है फेस वैल्यू इसकी. Then after we have place values.
सो 2 5 में 5 की प्लेस वैल्यू 5 इंटू 1 फर्स्ट प्लेस 5, 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 10th प्लेस पे है ये 20, दैट इज वाई वी रीड 25 because of the place values 25 125 125 5 की प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू 100 एंड द नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 125. This way we write numbers in terms of place values. ठीक है. So if a 2-digit number is there, उसको we can write this way or not? AB. It is not A multiplied by B. AB means A is at 10th place, B is at unit place. है ना? In terms of place value, if we try to write this number, B की place value B into 1, A की place value A into 10. So number will be 10A plus B or not? यही होगा 10A plus B. इसमें there is one case, if we reverse the digits, like 25 is a number, if we reverse the digits, it will become 52 or not? 52. ठीक है, तभी तो 2 digit वाला चल ही रहा है कि 2 digit number total 92 digit numbers are there, 10 से start होता है till 99. If any 2 digit number को we write this form में A B X Y P Q कुछ भी लिखो आप, but if we write them in terms of place values, B is coming at unit place, A is coming at 10th place. तो B की वैल्यू in terms of place value B into 1, A की place value A into 10, 10th place पे. तो इसको we can write number को 10A plus B. यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, 25 में 25 को we can write 2 into 10 plus 5 into 1, तभी ये मिल रहा है टोटल मिला के 25. सेम थिंग आई हैव रिटन. और A और B की वैल्यू वी डोंट नो. A and B are single digits. If A and B are single digits, if I ask what values they can take, A की वैल्यू can be A, B, they are single digits. तो डेसिमल सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे. Digits can take value 0, 1, 2, 3 till 9 only. These are digits. With the help of these digits, कितने digits हैं total? 10. With the help of these digits, we can make any number. 2 digit, 3 digit, 5 digit, 10, 1 lakh digit, कोई भी number we can form with the help of these 0 to 9 digits. कर सकते हैं ऐसा. तो A and B can take values. What is the possibility for B? B की possibility if I ask 0 to 9. In this case, if this is a 2-digit number, what is the possibility for A? 1 to 9. Why 1 to 9? Why not 0? If we take A की value 0, the number will become a single digit number. Correct? The number will become single digit number. Here we have assumed कि AB is a 2-digit number. तो A cannot be 0. A can be 1, 2, 3. क्योंकि 2-digit number start ही होता है 10 से, है ना? 0 से तो start नहीं होता है. 10 से ये पहुंचता है 99 तक. If I reverse the digits,
interchange the digits. So it will be BA, correct? What will be the place value? 10B plus A. 10B plus A. If we take the difference of these two numbers, if we take the difference of these two numbers in terms of place values, तो difference क्या हो जाएगा? 10A plus B minus 10B minus A. यही होगा. What we can write? 10A minus A, 9A minus 9B. That means we can write कि this is 9A minus B. 9A minus B. This will be the difference. This will be the difference. 9A minus B. If I ask कि you take any two-digit number and reverse the digits and take the difference, that difference will be coming this only, 9A minus B. So this difference will always be divisible by 9 or not? Because 9 is there. 9A minus B. अब इसको डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. That means this is true for any two-digit number. If we reverse the digits, take the difference, that difference will always be divisible by 9. अगर 9 से divisible है, तो that number will always be divisible by 3 also. So we can have this observation कि this difference will always be divisible by 9 and 3. Take any number. 25 लिया, 25 का reverse करा, what we are getting? 52. What difference we are getting 25 and 52 का? 27. 27 is divisible by 9 as well as 3. Take any two-digit number. You will get the same. But if I take 11, then if I take a two-digit number which is 11, if I reverse the digits, it will again be 11. The difference will be 0. 0 is divisible by 9 and 3. 0 भी है divisible 9 और 3 से. 0 को अगर डिवाइड करूं मैं 9 से, है, और 0 जो है 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, सारे नंबर से डिविजिबल. दिस वे वी गेट. तो इसके लिए भी इट इज ट्रू. एक्सेप्शन नहीं है कुछ इसका. Then the second case we can have for two-digit number. This is the first observation. कि the difference will always be divisible by 9 and 3. If we take the second observation for two-digit numbers, we are reversing the digits. Place values 10A plus B, 10B plus A. If we take the sum of these numbers, then sum will be 10A plus B plus 10B plus A. What we are getting? 11A plus 11B, or 11
A plus B. 11 A plus B. That means this sum will always be divisible by 11. ये होगा ऐसा? ये हो रहा है? ये होगा? होगा? So this is true for 2-digit numbers. We have seen two observations for 2-digit number when we are reversing the digits. First, we have taken the difference. Second, we have taken the sum. And we have seen that this difference and this sum will always be divisible by some numbers. And what are these numbers? अगर ये बोल भी जाता है तो we know how to do it. We can get this idea. कि this way we can approach. And we'll get कि what we are getting. कि किससे it will always be divisible. अब 11 के do we have any factor like 9? 11 का 11 is a prime number. So we don't have any factor for 11. 11 है और 1 है. Just two factors. Then the same way we can see for 3-digit numbers. We can write this way, 3-digit number. How many 3-digit numbers are there? 100 से 999. 900 की 990? 900, yes, correct. So it starts from 100 till 999. How many? 900 3-digit numbers are there. We can calculate this with the help of permutation and combination also. We'll see in that chapter कि कैसे. अच्छा, how come 97 and 79? This is related to, I think, the previous question. 97 is a 2-digit number. If we reverse the digits, we'll get 79. If we take the sum कितना आ गया? 176. This 176 is divisible by 11 or not? Yes, that means what we have observed, it is true for all 2-digit numbers. We can check for other numbers also. So 3-digit number, what can be the place value? 100 A plus 10 B plus C. If we reverse the digits, first and last, if we reverse the digits, we can write it as CBA, like 139. If we reverse the digits, we'll get 931. Here the place value, 100 C plus 10 B plus A. If we take the difference, so what value we are getting? 100 A plus 10 B plus C minus 100 C minus 10 B minus A. This 10 B will get cancelled out. 100 A minus A, 99 A, C minus 100 C minus 99 C. So what we are getting? 99 A minus C.
99 A minus C. That means this difference will always be divisible by 99 and the factors of 99. What can be the factors of 99? 3, then 9, then 11, 33, 39 also. So by 99 and the factors of 99. 27, ठीक है, 9 और 3 दोनों है तो हो जाएगा. विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करना है. 99 के हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर. विल ट्राई टू सी व्हेन विल स्टार्ट डूइंग दिस एलसीएम एचसीएफ. उसमें विल ट्राई टू सी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स. ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि 99 के हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, 92 के हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर. दिस इज क्लियर. So if I take a number this 139931, if we take the difference, that difference की value, is it divisible by 99? Just check it. 931 minus 139, that is divisible by 99. हो रहा है? Take any 3-digit number and reverse the digit and take the difference. We'll see कि that difference की value will always be divisible by 99. Then the second case we can have 3-digit number. If we are reversing the digits, place values. If we take the sum, if we take the sum of these values, then what we are going to get? कितना मिल जाएगा? 100A plus A, 101A plus 10B plus 10B, 20B, C plus 100C, 101C. Are we getting anything out of it? जैसा अभी तक हमने देखा है, हमने करके देख लिया. वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर? बस ऐसा ही आ रहा है ये 101 A plus C plus 20B. Nothing common we can get here. That means sum वाले केस में we are not getting anything like we got for 2-digit and 3-digit number के difference and sum में. ठीक है, यहाँ sum में we are not getting anything. तो sum वाले से तो कुछ नहीं निकल रहा है, इसको फिर छोड़ दिया. But ऐसे भी questions can be framed. We'll try to see. They will provide some B key value, and then they can ask you what is the difference between A and C, or what will be the sum for A and C. We'll try to see the questions also. If I take a 2-digit number AB, and if I reverse the digits BA, reverse the digits BA, and their difference is 63. Can it be? The difference can be 63 or not? हो सकता है. Their difference is 63. How many pairs are possible? How many pairs of such numbers are possible? How many pairs of such numbers are possible?
This is the question. And we are talking about 2-digit numbers only. Only 2 pairs. So how we can proceed in these kind of questions? We know how we can calculate difference. If we take the difference क्या आ रहा था हमारा 9a minus b, and this difference is given here 63. So a minus b की value 7. A minus b is equal to 7. And we know a and b can take values from 0 to 9. जहां पे 0 cannot be a possibility, a b है, तो अगर 0 आ गया तो फिर भी 0 रख के देखेंगे, देखते हैं कि मिस तो नहीं हो रहा है. तो a and b can take values 0 to 9. 0 to 9. And दोनों का difference is coming 7. So what possible values we can take for a and b? तो a में से we are subtracting b. a की value, maximum value what we can take? 9. If we take a की value 9, तो b की value will be 2. तभी we can get 7. a की value if I take 8, b की value 1. तभी we can get 7. a की value if I take 7, then b की value 0. तभी we can get 7. a की value if I take 6, there is not any possibility. कोई possibility नहीं है यहाँ पे. That means ये 3 बन रहे हैं possibility, but इसमें what is, अगर a की value we are taking 7, b की value is coming 0. तो यहाँ पे like first if we take, first number will be 92 or 29. Second number will be 81, 18. Here the number will be 70, 07. This is not a 2-digit number. So how many pairs? Only 2 pairs we can make. 2 pairs we can make. 2 is the answer. Like in counting, finding how many 9s are there, we divide 10 by 3. So we only divide with prime numbers. Yes, correct. Correct. That is correct. Very true. Yes. 2 pairs of such numbers. If they ask about numbers, so what numbers we are getting? We are getting 5 numbers. But 5 numbers may sometimes they put this condition. If we are having a 2-digit number, after reversing the digits, we are getting a 2-digit number. Correct? Then this will not be counted. If no condition is given, so we can consider this one extra number. So 2 way the questions are being framed, ki how many pairs are there, and another is how many numbers are there. 2 way questions are being framed. हम दोनों ही करेंगे. If I ask the same way another question, if a 2-digit number AB, we are reversing the digits and we are getting the difference as 27. 27. How many numbers are possible? How many such numbers are possible? The same type of earlier question mein it was asked how many pairs. The question is, if we are having a 2-digit number and we are reversing the digits, we are getting again a 2-digit number, then the difference of these two numbers is 27.
how many such numbers are possible? 13, 12. So difference we know ki how we calculate the difference, 9a minus b. This difference is given 27. So a minus b 27 by 9 कितना आ गया 3. a minus b is equal to 3. So what are the possibility? A की maximum value we can take 9. So this value is 6, 8, 5, 7, 4, 6, 3, 5, 2, 4, 1. Then 3 अगर लेते हैं तो ऐसे हमने सारा लिख दिया. Yes, this is a prelims question. This is a UPSC previous year prelims question. ये 27 वाला. अब उसमें what are the options? ऑप्शन में था कि 4, 5, 6, none. This way options were there. So how many numbers we can have here? यहाँ पे like 96, 69, 85, 58, 74, 47, then 63, 36, 52, 25, 41, 14. Then we have 30, 03 we cannot take. Right? So this way the answer will be how many numbers? None. Here what we have written, after reversing the digits we are getting 2-digit number. Then we'll not take this. Will not take this. क्योंकि रिवर्स करने पे यहाँ पे we are not getting 2-digit number. So that number we cannot count. That number we cannot count. Why we cannot count? Because in the question itself it is written कि after reversing the digits we are getting a 2-digit number. Here we are not getting a 2-digit number. We are getting a single-digit number. So we'll not count it. Will not count it. Yes, this is a previous year question. This question came in 2017. This came in 2017. We can write another question. अब ऐसे कुछ भी difference they can ask. They can ask for 27. They can ask for 18. They can ask for 9. They can ask for 45. Will get answer. Write down another question. Yes. Pairs. Difference के बारे में it is not given कि it is 2 or not 2. Because 9 is also coming. 9 also can be difference. Yes. Yes. 30 को we are not counting 30 here because in the question it is written कि if we are reversing the digits we are going to get a 2-digit number. So in case of 30, if we are reversing the digits we are going to get a single-digit number. That is why we are not counting that number. If it is not given then one extra number we can count कि 30 is also a number. Yes. Hmm. 3, 9,
हाँ. Hmm. It is not divisible by 27. Okay. 27 कैसे फैक्टर? 99. 99 में, हाँ हाँ ठीक है. नहीं नहीं, 27 तो नहीं है. 99 में क्या है ना? कोई नहीं, अभी अभी करते हैं 3 डिजिट नंबर वाले पे, अभी करेंगे. व्हाट यू जस्ट सेड उसी पे विल सॉल्व वन क्वेश्चन. उसी पे विल सॉल्व वन क्वेश्चन. The number which fulfill the condition which is given in the question. Like in the previous one, we were getting numbers this way, 96. If we are reversing the digits, we are getting 69. What difference we are getting? 96 minus 69, 27. It is fulfilling the condition. Because in the question it is written, the difference of these two numbers is 27. It is fulfilling the condition. Difference is coming 27 and these two are 2 digit numbers also. One possibility हो गई. अब 69 लिया या 96 लिया, both the numbers are possibility. कि अगर 69 लिया, 69 का if we reverse the digits we are going to get 96. Then also the difference we are getting 27. So it is fulfilling the condition. If it is fulfilling the condition, will count as a number. 96 को will count as a number, 69 को will count as a number. इसी तरीके से will try to look for other possibility and will count them कि how many such numbers are there and will answer. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखते हैं. The ratio of 2 digit number, the ratio of a 2 digit number to the number formed by, to the number formed by reversing its digit, reversing its digit is 4 is to 7, is 4 is to 7. I am repeating it again. The ratio of a 2 digit number, the ratio of a 2 digit number to the number formed by reversing the digits, reversing the digits is 4 is to 7, is 4 is to 7. 4 is to 7. The number of such pairs are, the number of such pairs are options. Answer none. Why not 6? Because we have 6 pairs, but in the question it was asked how many numbers are there. Agar pairs hota, तो yes, we can say 6 pairs, but it is asked how many such numbers are there. Then answer of the last question, please check it once more. I guess it is 6. उसमें हमने लिखा है numbers. अगर pairs लिखा होता तब आंसर होता 6. ऐसे ही रहते हैं. Pairs and numbers, two types are there. Once they are asking how many pairs are there, then they ask how many such numbers are there. आ रहा है इसमें? The same way we can proceed.
वी कैन राइट प्लेस वैल्यूज के टर्म्स में 10a plus b, and when we are reversing the digits we'll get 10b plus a, and this ratio is 4/7. यही दिया हुआ है. We are going to get a relation between a and b. 70a plus 7b is equal to 40b plus 4a. 70a minus 4a, 66a is equal to 40 minus 7, 33b. Or we can write 2a is equal to b. This relation we have got for a and b. So what possible values a and b can take? A and b can take values y 0 to 9. These are digits. तो b की वैल्यू, अच्छा आंसर 3 पेयर्स आ रहा है, 4 पेयर्स. सो व्हाट वैल्यूज वी कैन पुट फॉर b? b इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू पुट करके रखते हैं, विच इज स्मॉलर. a की वैल्यू इफ आई पुट 1, तो b की वैल्यू विल बी 2, 2 into 1. a की वैल्यू इफ आई पुट 2, 4, 3, 6, 4, 8. If I put 5, it will be 10, and 10 cannot be a possibility. Why? Because b can take values up to 9 only. So how many pairs we can have? 1, 2, 3, 4. 4 pairs. 4 pairs. ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो ऐसे यूपीएससी लाइक अल्टरनेट ईयर्स पे दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी पेयर्स, हाउ मेनी नंबर्स. तो अगर नंबर पूछेगा तब 8 हो जाएगा, क्योंकि वाई वी आर सेइंग कि लाइक दिस वे. नंबर क्या है हमारा? ए बी. दिस इज द नंबर. वी कैन हैव दिस 1 2. वी कैन हैव 2 1 ऑल्सो. We can have 2 4. We can have 4 2 also. So this way we can have these many numbers. Pairs पूछ रहा है तो we'll say 4 pairs. ठीक है. एक 3 digit नंबर वाला करते हैं. What you asked. इसमें 8 आएंगे. ये तो ले ही नहीं सकते ना, ये तो ले ही नहीं सकते. ठीक है. आंसर इसका है 4 पेयर्स. 4 पेयर्स. राइट ऑन दिस क्वेश्चन. A number consists of 3 digits. A number consists of 3 digits for which the middle one is 0. The middle one is 0, and their sum is 4, and their sum is 4. Their sum is 4. If the number is formed by interchanging the first and last digit, if the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198. फिर से I am repeating. If the number formed by interchanging the first and last digits is greater than the number itself by 198.
Then what will be the difference between first and last digit? Then what will be the difference between first and last digit? Question में ये है 3-digit number, first and last digits are being interchanged. Then this number after interchanging the digits is 198 more than the previous number. यही है. And this information first statement से. The question is this. ये निकालना है. Please explain 2a is equal to b. Okay, I will take that. Options. टू आ रहा है. We can simply take this. यहां पे क्या लिखा है? Is equal to 198. अब इसकी प्लेस वैल्यूज इफ वी कैलकुलेट, ये तो नंबर्स 3 डिजिट्स हैं ए बी सी. If we take the difference of these two numbers in terms of place values, what we are going to get? ये क्या हो जाएगा? 100C plus 10B plus A minus 100A minus 10B minus C. What we are going to get? 99C minus A, and that is equal to 198. So C minus A is equal to, कुछ करना ही नहीं है, C minus A is equal to 2. What is asked? दोनों ही पूछ रहे हैं. क्वेश्चन में it is written कि what is the difference between first and last digit. So it can be A minus C or it can be C minus A. दोनों सेम है. So we are getting answer as 2. We are getting answer as 2. And we haven't used this information which is given in the first statement. कि A plus 0 plus C, middle digit is 0. And their sum is 4. वहां से भी we can get this information. Answer वहां से भी मिल जाएगा? नहीं? ये तो समझ में आया सबको कि what we did, क्वेश्चन में जो लिखा था कि this new number is 198 more than the original number. That means this number minus this number is equal to 198. This number minus this number, in terms of place values we have calculated, it is coming 99C minus A. This is equal to 198. तो C minus A की वैल्यू 2 आ गई. But if we take this information कि first plus middle one plus last one is equal to 4, what can be the possibility for A and C? We can take A की वैल्यू 1, हाँ करेक्ट, 3, 1. What else? What else? This way. These are the possibility. 0 plus 2 plus 2 नहीं हो सकता. Middle one is 0. Middle one is 0. अब इसमें we need to check if we get this number 103. If this is the number,
If we are reversing the digits, it is coming 301. What difference we are getting? 198. That means this can be a possibility. This is the number. तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस क्या है? 3 minus 1 is 2. या फिर 301 लिया, after reversing the digits we'll get 103. Difference is coming 198. That means this is the number. So difference of first and last digit 3 minus 1 we are getting 2. Correct. बाकी ये तो तरीका है ही, by applying this place value वाला concept we can get answer. ठीक है. अच्छा, किसी को ये नहीं समझ में आया? लास्ट वाले क्वेश्चन में we did this way. रिलेशन के बाद हमने निकाला था ना 2a is equal to b. 2a is equal to b. What can be the possibility for a and b? क्या हो जाएगी possibility? a and b can take values from 0 to 9. तो 2a is equal to b. If I take a की वैल्यू 1, what will be b की वैल्यू? a की वैल्यू अगर 1 है, b is equal to 2a है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into a की वैल्यू I have taken 1, तो b की वैल्यू हो गई 2. If a की वैल्यू I take after 1 I can take 2, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 4. a की वैल्यू after 2 I can take 3, तो b की वैल्यू 6. a की वैल्यू after 3 I can take 4, तो b की वैल्यू will be 8. a की वैल्यू if I take 5, b की वैल्यू will be 10, which cannot be a possibility. Which cannot be a possibility. So we can have 4 such pairs. 4 such pairs. ठीक है. तो अभी यहीं पे ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर का. आफ्टर देन यहीं से विल कंटिन्यू और डिविजिबिलिटी रूल भी आज शुरू करेंगे. ठीक है. और जो डाउट्स आ रहे हैं अपने में डिस्कस करो अभी फिर उसके बाद मुझसे पूछो. पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो कहता हूं पढ़ाना शुरू करो आप लोग अपने फ्लैट में, फ्लैटमेट्स को. यू स्टार्ट टीचिंग देम. आई नो मैथमेटिक्स वेरी वेल, आई विल टीच यू. टॉपिक्स मैं बताता हूं. ओके, सो वी कैन डिस्कस वंस मोर दिस क्वेश्चन. क्या था क्वेश्चन? लास्ट वन. वी हैव अ 3-digit नंबर. We are reversing the digits. We are reversing the digits. We can calculate the place values. 100a plus 10b plus c. If we are reversing the digits, first and last, what will be the place value? Plus 10b plus a. If we take the difference, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स वी आर गेटिंग दैट नंबर 100c plus 10b plus a. This number is 198 more than the original number. Original number is 100a plus 10b plus c. This is given in the question. We have simply written that statement in mathematical form. We can simplify it. अगर simplify करेंगे 100c minus c will get 99c. This 10b will get cancelled out. Then a minus 100a will get 99a is equal to 198. यही दिया हुआ है क्वेश्चन में. वी कैन टेक 99 कॉमन हियर, विल गेट ब्रैकेट में c माइनस a इज इक्वल टू 198. सो c माइनस a की वैल्यू विल बी 2. यही क्वेश्चन में पूछा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट? फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, द डिफरेंस इज कमिंग एज 2.
2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही करा था, मिल जाएगा आंसर। और दूसरा तरीका क्या करा था हमने, सेकंड अप्रोच, ये समझ में आया सबको पहले? ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है एट एनी स्टेप? ठीक है, समझ में आ गया। देन व्हाट वी डिड, ये भी दिया हुआ है कि फर्स्ट प्लस मिडिल वन प्लस लास्ट वन, the sum is coming as 4. So what can be the possibility for A and C? B is fixed, B key value is 0. So if we take A key value 1, C key value will be 3. It is coming 4. That means that number is 103. It is a possibility. We need to check with the second statement. If we reverse the digits, we are getting 301. After reversing this, we are getting 301. Is this 301 198 more than 103 or not? We can say yes, the difference is coming 198. That means this is the number which we are looking for. अगर ये है नंबर, तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट कौन सी है? 3 and 1. What will be the difference? 2. 2 है ये हमारा आंसर. सो बोथ वे वी कैन गेट आंसर, बोथ वे, दोनों समझ में आ रहा है? ठीक, और एक मेथड है, हाँ, दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करके भी कर सकते. ठीक है, एक ही क्वेश्चन के लिए 6-7 मेथड हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े. एंड वो 27 वाला तो नहीं रहेगा. वाई? क्योंकि 9 जो हमने डिफरेंस लिया, दिस डिफरेंस इज कमिंग 99 A माइनस सी और C माइनस ए. अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर वी आर टेकिंग, we are reversing the digits, तो difference is coming this way, A minus C or C minus A. This difference will always be divisible by 99 and the factors of 99. तो 99 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3, 9, 11, 33 ऑल्सो 99. इसमें 27 नहीं आएगा. वाई 27 विल नॉट कम? क्योंकि इसको अगर लिखेंगे 99 को 11 इंटू 9, 11 इंटू 3 इंटू 3, अब इसमें 27 तो आने की कोई चांसेस नहीं है. सो विल से कि दीज आर द फैक्टर्स विथ विच दिस नंबर विल बी डिविजिबल, 99. पी वाई क्यू है ये, हाँ बिल्कुल पी वाई क्यू ही है. 17 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. बट इन द केस ऑफ 202 द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज 0. बट अभी क्या करा था हमने? सेकेंड कंडीशन भी तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना. डिफरेंस मस्ट बी 198 होना भी तो चाहिए. वन स्टूडेंट इज सेइंग कि इफ वी टेक दिस एज 202, तब भी सम आ रहा है 4, तब भी वी आर गेटिंग सम 4. तो 202 is that number. If we assume कि 202 is that number, if we reverse the digits, again we are going to get 202. So this 202 is not 198 more than this number. ये तो है ही नहीं. That means this cannot be a possibility because second statement भी तो है. That also need to be fulfilled. Fulfill नहीं हो रही है condition. That is why we cannot take this 202. ठीक है, ठीक है. तो यहां पे एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, दैट इज 2, और कोई वैल्यू नहीं आ रही है. वी आर गेटिंग जस्ट
one value for the difference of first and last digit, that is 2. एक ही आ रहा है, ठीक है. बोला आ रहे हैं. एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, लगा दीजिए, पीपीटी से ही करते हैं. See this question. लिख भी लो इसको क्वेश्चन को. A two-digit number is reversed. The larger of the two numbers is divided by the smaller one. What is the largest possible remainder? Try to attempt this question, see what answer we are getting. $45. इसमें we can see कि if we are calculating the place values, is it any help in solving this question? A two-digit number is reversed. 9 आएगा आंसर. 9, 27, 36 and 45. 4 ऑप्शंस है. 9 आ रहा है आंसर. What is given? The larger of these two numbers is divided by the smaller one. अगर place values we calculate, suppose this is the larger one, we are dividing by the smaller one. Largest remainder क्या होगा यहाँ पे? Are we getting any help with this? कुछ help होती दिख नहीं रही है. So what we can do? What is the largest two-digit number? 99. We can take 99. If we reverse the digits, 99. What remainder we are going to get? 0. Option में है ही नहीं. After 99 we have second largest is 98.
If we reverse the digits, 89, what remainder we are getting? 9. दोनों ही 2 digit number हैं, we are getting remainder 9. After 98, 97. Reversing the digits, 79. What remainder we are getting? 18. तो 9 तो नहीं, 18 है नहीं ऑप्शन में. If we take after 97, 96, 69. What remainder we are getting? 27. तो 9 cannot be answer. 27 आ गया. After this, 95, 59. What remainder we are getting? 36. So this 27 is also not the answer. 94, 49. What will be the remainder? 45. Do we have any number more than 45? We'll stop and we'll say the answer is 45. Answer is 45. ठीक है. Other method, I'm not getting anything. क्योंकि हमने देखा ना, what we did, we can go with the place values, but we are not getting anything. That is how the UPSC sets the paper. So that we need to do something कि इसको छोड़ना है कि करना है. If we have solved this earlier, then only we can solve this question. Otherwise, in the examination hall, how we can think of this way, कि we can take the largest two digit number. We can start. We can take smallest also. We can start with 11 also, 10 also, है ना. It will be difficult. अगर 10 से start करा 9 आ रहा, फिर उससे 10, 11, 12, 13, 14. It will take so many hits and trials will get कि चलो यार छोड़ देते हैं इसको. ऐसा ही हो जाएगा फिर. छोड़ना ही बेहतर है ना. अभी तो कर लिया, इस तरीके का आएगा तो निकाल लेंगे. आफ्टर दिस, अभी 2 digit 3 digit नंबर में देयर आर सर्टेन वेरिएशंस, मैनिपुलेशन ऑफ डिजिट्स. अभी और सारे इसमें हैं, बट बिफोर दैट विल स्टार्ट विथ डिविजिबिलिटी रूल. So divisibility rules, maybe we can start with, what is 1 का divisibility rule? All the numbers are divisible by 1? कि all the natural numbers or all the integers, है ना. So here we are talking about basically the natural numbers. तो कोई भी नंबर उठा लिया, all these numbers will be divisible by 1. Divisibility rule of 2, last 2 digits or 1 digit, last 1 digit must be divisible by 2. Then we can say कि that number is also divisible by 2. यही बोल सकते हैं. If I take any number 2, 3, 5, 7, 8, is this number divisible by 2? So we'll take last digit, उसको will try to divide by 2. अगर पूरा divide हो रहा है, that means this number is also completely divisible by 2. This way we can understand. Then what is divisibility rule of 4? Last 2 digits must be divisible by 4. Then we can say
कि that number is also divisible by 4. If I have any number this way, 1 9 2 5 7 0 0, is this number divisible by 4? इसमें we'll check for last two digits. Last two digits 0 0. Is it divisible by 4? 0 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0, दैट मीन्स डिवाइड कर रहा है. और दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. एट लास्ट 3 digits must be divisible by 8. Last 3 digits must be divisible by 8. Then we can say कि that number is also divisible by 8. So if I take any number 1 2 5 7 8 2, is this number divisible by 8? So last 3 digits will divide by 8. If this 782 is not divisible by 8, we'll say कि this number will also not be divisible by 8. अगर हो रहा है बोलेंगे ये नंबर भी 8 से divisible है. 2 को we can write 2 के पावर 1, last 1 digit. 2 के पावर 2, last 2 digits. 2 के पावर 3, we will get 8, last 3 digits. 2 के पावर 4, 16, last 4 digits must be divisible by 16. 2 के पावर 5, 32, last 5 digits. लेकिन पूछेगा यहीं तक. But in case they are asking this way, we can have this idea कि ये भी होता है. Last 4 digits must be divisible by 16. अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते कि if a number is divisible by 4, if a number is divisible by 4, if this number is x, so this number x will also be divisible by 16, क्योंकि 16 का फैक्टर तो 4 है. फिर क्यों नहीं बोल सकते? So अगर कोई, if I ask this way, a number x is divisible by 16, this number x will also be divisible by 4. Can we say this? We can say this. But ulta we cannot say. Ulta we cannot say. Why we cannot say? We can take example also. If I take example this way, if a number is divisible by 4, we can take that number as 8. 8 is divisible by 4. Is this 8 divisible by 16? No. Ulta nahi hoga. Correct. But if a number is divisible by 16, that number will also be divisible by 4. So ऐसे statement they can ask. Simply statement. One statement, two statement. First statement is a number x is divisible by 16. This number x is also divisible by 4. Can we say this number x is also divisible by 8? Can we say this? क्योंकि 16 का फैक्टर है 8. अगर 16 से डिविजिबल है, दैट मीन्स
That number will be divisible by 4 also, will be divisible by 8 also, will be divisible by 16 also. सिर्फ यही रहता कि a number x is divisible by 4. Can this number be divisible by 8 always? No? No. उल्टा नहीं होगा. तो ये ध्यान रखना है. ऐसे statements can be framed. और पूछा भी है ऐसे simple statements. After then, we can have divisibility rule of 3. Sum of digits must be divisible by 3. If I write any number 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, is this number divisible by 3? We'll take the sum of the digits. No, not divisible by 3. हमने we took the sum of it digits and will divide by 3. अब ऐसे भी कर लेंगे कि 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9, तो ये 9 तो गया, 2 + 1 3, 3 7 5 12, 8 बचा, 8 को 3 से डिवाइड करा, we are getting remainder as 2. That means this number is not completely divisible by 3. Then the same way, divisibility rule of 9, sum of digits must be divisible by 9. Then only we can say that number is also divisible by 9. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1. Is this number divisible by 9? We'll take the sum of the digits, will divide by 9, we'll see कि ये हो रहा है. If yes, then we'll say कि this number is completely divisible by 9. हो रहा है. बस यहाँ पे ये करा था 8 9 सेम नंबर, इसमें 1 ऐड करा था, 8 + 1 9. ठीक है. After then, divisibility rule of 5. If unit digit or last digit is 0 or 5, then we can say that number is divisible by 5. Then divisibility rule of 6. If a number is divisible by 2 and divisible by 3, both conditions, if both the conditions are fulfilled, then only we can say that number is divisible by 6. That number is divisible by 6. ठीक है. Then what else? Divisibility rule of 10. 7 का divisibility rule will read with 7, 11 and 13. Combined divisibility rule we'll discuss after this. 7, 11, 13 का. Divisibility rule of 10. If unit digit is 0, then we can say that number is divisible by 10. Divisibility rule of 100. If last two digits are 0, then we can say that number is divisible by 100. सिंपल है ये सब, तो है ना. लिख लिया सबने. If I take some examples like 1, 2, 3, 5, A, this is a number.
This is a number where a is a digit, where a is a digit. This number is completely divisible by 2. How many values a can take? How many values a can take? So a can take 0, 2, 4, 6, 8. Total 5 such values. है ना? If I write another example, 1, 2, 3, a 2. This number is completely divisible by 2. How many values a can have? तो a क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 2 से डिविजिबल है, 2 तो है यूनिट प्लेस पे. What values a can have? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 10 such values. ठीक है. Then if I ask, suppose we are having a number 1, 2, 5, 7, a. This number is completely divisible by 3. How many values a can have? फोर आ रहा है. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स. कितना आ गया सम ऑफ डिजिट्स? 15 प्लस ए, 15 प्लस e. This must be divisible by 3. What can be the possible values of e? A की वैल्यू कैन बी 0, 15 से divisible. After then 3, after then 6, after then 9, after then a is a digit, so it cannot go beyond 9. Total 4 such values. Total 4 such values it can take. If I write another number 1, 2, 5, 7, 1, a. This number is completely divisible by 3. How many values a can have? The same approach we can follow here. Sum of the digits 16 plus a must be divisible by 3. What possible values a can have? a की वैल्यू क्या हो सकती है? 2. Then 5, 8. After then total count is coming as 3. So answer is 3. Answer is 3. Simple है, we are getting answers. If I write another question 1, 2, 5, 7, a 2, 5. This number is completely divisible by 3. How many values a can have? अभी तक a यूनिट प्लेस पे था, I have written in between. How many values a can have? Three values.
अब ए यहां पे हो, यूनिट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, कहीं पे भी हो, वी आर कैलकुलेटिंग सम ऑफ डिजिट्स. Sum of digits, here it is coming 22 plus e. This must be divisible by 3. तो a की वैल्यू कैन बी 2, a की वैल्यू कैन बी 5, it can be 8. टोटल काउंट इज 3. सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो लग जाएंगे तुरंत, और ऐसे पूछा भी है. If x is equal to 1, 2, 5, 7, 8, 9, a, this number is completely divisible by 9. How many possible values a can have? How many possible values a can have? Only one value. If we take sum of digits, ये कितना हो गया? वैसे भी इसको हटा ही दो. 5 प्लस a. तो a की व्हाट वैल्यू पे इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9? 4. a की वैल्यू 4. So only one possibility is there. Only one possibility is there. और वो पॉसिबिलिटी 4 ही आ रही है सबकी. करेक्ट. देन इफ आई राइट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं ऐसा. If I provide one statement this way, statement 1, all the numbers are divisible by 2. Second statement, all the numbers are divisible by 3. Then first conclusion this way, कि all the numbers are divisible by 6. Second, कि all the numbers are divisible by 4. Options, only first conclusion is true, only second one is true, both are true, none. So we know divisibility rule of 6, that is this key, all the numbers must be divisible by 2, all the numbers must be divisible by 3. And this is a previous year question. This way only statements were given. If we know divisibility rule of 6, सीधा ही मार्क कर देंगे कि ऑप्शन conclusion 1 is true. Correct. ऊपर था we have a set of numbers. वैसे यूपीएससी ने भी कुछ ऊपर लिखा नहीं था, ऐसे ही था स्टेटमेंट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें भी है ना ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. बिकॉज इसमें व्हाट इज द कंफ्यूजन कि नेचुरल नंबर्स है ना, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस आल्सो कैन कम. तो अब उसमें भी अगर ये दो स्टेटमेंट है
कि these numbers are divisible by 2, these numbers are divisible by 3, 6 का divisibility rule लगाया और आंसर आ गया। और जैसे अभी भी एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कंफ्यूजन चल रहा है ना क्वेश्चन का, दिस ईयर वन क्वेश्चन केम अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबाउट दिस कि पार्लियामेंट, दैट टाइम पार्लियामेंट वाज हैविंग कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड व्हाट एक और था कुछ, तो उस पे सेकंड स्टेटमेंट वाज दिस वे, इफ यू रीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसमें लिखा हुआ है कि these subjects are having mentions in government of India Act 1935 कि parliament can make some laws। लेकिन कॉमन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसमें आगे भी लिखा हुआ है कि गवर्नर इज हैविंग कंट्रोल ओवर इट। अगर देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो यूपीएससी बहुत डीप में जाके ऐसे नहीं पूछती है। यहाँ पे भी वैसा ही है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं सो विल थिंक कि ये नेचुरल नंबर्स के बारे में ही है, अदरवाइज दे विल स्पेसिफाई कि दे आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। डिविजिबिलिटी रूल की बात चल रही है सो दे विल टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, अदरवाइज दे विल स्पेसिफाई कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज अ सुपरसेट वेयर वी कैन हैव ऑल द नंबर्स। ठीक है, इस साल का पेपर देखा था आप लोगों ने कि नहीं देखा था? जीएस नहीं, जीएस सीसैट, सीसैट का नहीं देखा था? देख लेना एक बार, देख लेना। वाई नॉट ऑप्शन सी? क्योंकि ऑल द नंबर्स क्या है ऑप्शन सी में, दे आर डिविजिबल बाई 4। क्या चीज? ऑल हटा दें तब? नहीं, स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फॉर दिस द सेट ऑफ these numbers, all the numbers, we have a set of numbers, उस सेट में all the numbers are divisible by 2, उस सेट में all the numbers are divisible by 3, then first conclusion is कि all the numbers in that set is divisible by 6, all the numbers are divisible by 4। can we say this divisible by 4? we can take example also कि if I take this example as 6, 6 divisible by 2, 6 divisible by 3, but 6 not divisible by 4, that is why we can negate this। we can have other examples also how we are negating this। तो ये तो हो ही नहीं सकता, second cannot be a correct one। sum of, हाँ can be, if it is written कि all these numbers या sum of the numbers can be divisible by 4, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है व्हेन विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसमें वन टाइप इज ऑलवेज, दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 4, विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 6। सेकेंड टाइप इज कैन बी टाइप, कि दिस नंबर कैन बी अ प्राइम नंबर, दिस नंबर कैन बी एन इवन नंबर, दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 4। सो दिस वे कैन बी टाइप एंड ऑलवेज, दो टाइप होते हैं, कैन बी में हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन व्हेन दे आर आस्किंग कैन बी वाला टाइप मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। विल सी दैट। if I write another question this way, two statements, first statement is there are the multiplication or the product of two numbers is 21। second statement, the sum of these two numbers is 10। the question is what are these two numbers? Options, we can get answer
by using statement 1 only. We can get answer by using statement 2 only. We can get answer by using both the statements. None. We cannot get answer even after using both the statement. What are these two numbers? तो फर्स्ट स्टेटमेंट से भी वी आर गेटिंग आंसर 7 into 3 21. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से भी वी आर गेटिंग आंसर. सेकेंड स्टेटमेंट से आर वी गेटिंग आंसर? इफ वी टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट में व्हाट इज रिटन? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स 21 है ना. सो फैक्टर्स कैन बी 7 into 3, वी कैन गेट 21. ए एंड बी की पॉसिबिलिटी 7 3 हो सकती है एंड ये भी हो सकता है ना. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 वी आर गेटिंग two such numbers, I mean two pairs, 4 numbers we are getting. पूछ रहा है क्वेश्चन में what are these two numbers? With the help of statement 1 we are getting one pair as 7 3, another pair as 21 1. So statement 1 से we are not getting answer. If we take statement 2 की information, sum of these two numbers 10. Can we get two numbers? A की possibility can be 1 9, it can be 2 8, it can be 3 7. So many possibilities we can have. We are not getting just two numbers, we are getting more than two numbers. That means statement 2 से भी we cannot get answer. But if we club these two statements की information कि sum is also 10 and their product is also 21. So do we have any two numbers such that they fulfill these two conditions? अब यहां से आ रहा है 7 3 and 21 1. दूसरे में क्या आ रहा है कि sum must be 10. So we have only one option that is available कि 7 plus 3 we are getting 10 and 7 into 3 we are getting 21. So if we are clubbing both the statements की information, then only we can get answer. है ना? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 100 सबको पता है? है तो हमारे पास पीडीएफ ना. See this question, ये भी हमने करा है गेस. इस टाइप का क्वेश्चन. Eight digit number leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of B are possible? C is coming as 4. तो इसमें we'll take sum of the digits.
it is coming as 30 plus b. It must be divisible by 3. What values we can take? 0, 3, 6, 9. Total count is 4. 4 will be our answer. Simple है. ठीक है. See this question. ये भी कर लेते हैं. ये दिख गया है. ये भी किया हुआ है हमने वैसे. How many zeros are there at the end of the following product? So we can calculate number of 2's, number of 5's. So we'll try to check कि which one is coming less number of times. We can see this is 5 ka table, 5 ke multiples. So 5 will be coming more than 2's. So number of 2's we can calculate, those many pairs we can make. So number of 2's कितने आ रहे हैं? 1, 2, then 1, then 3, then 1, 60 में 2. कितने हो गए हमारे? 10. 10 हो गया आंसर. अगर नंबर ऑफ 5's वी आर कैलकुलेटिंग तो कितना हो जाएगा? 12. अगर किसी ने नंबर ऑफ 5's 19 आ रहा है. नंबर ऑफ 5's, चलो क्यों ही निकालना है नंबर ऑफ 5's. 5 is not divisible by 3. Why we removed 1 to 9 except 5 in of 9 questions. उसमें simply we are going to apply that sum of the digits must be divisible by 9. तो for what value of a that number will be divisible by 9. तो एक ही वैल्यू आ रही थी, उसमें एक ही वैल्यू we had taken. This is the question we can do. चलो ये क्वेश्चन करते हैं. अभी दूसरी क्लास तो नहीं है किसी की आज? है ऑप्शनल. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इट इज अ 3-digit नंबर where x plus y plus z is not a multiple of 3, then this is not divisible by which number? क्या आ जाएगा आंसर इसका? नहीं होगा? A3. They are asking about this. This number is not divisible by not x, y, z. किसका आंसर 9 आ रहा था? 9 आ रहा है किसी का? हम्म. हम्म. हम्म.
सबका यही आ रहा है. We can take the place values also here. We can take place values. Place values में क्या आ जाएगा इधर? 100x plus 10y plus z. Then we have 100y x सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, सबको ऐड करा कितना आ जाएगा वैल्यू ये? x x x 11 111 x plus y plus z. ये आ गया. This is the number in terms of place values. This is the number in terms of place values. अब this number is divisible by 111 को we can write 3 into 37 into x plus y plus z. This is the number. So this number is divisible by 3, 37, x plus y plus z. कौन सा बचा? 9. 9 से नहीं जाएगा. 9 से नहीं जाएगा. So answer will be 9. Not divisible by 9 because sum of the digits is not divisible by 3, then not divisible by 9. देखो यहाँ पे लिखा है x y z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. x plus y plus z is not a multiple of 3 ये लिखा हुआ है. लेकिन ये जो नंबर वी आर गेटिंग दैट इज 111 into x plus y plus z. दैट मीन्स x plus y plus z से तो ये नंबर नहीं जाएगा. मतलब कैंसिल आउट होगा, कंप्लीटली डिविजिबल 3 से होगा, 37 से होगा, बट नॉट 9. 9 से नहीं होगा. दैट इज वाई द आंसर इज 9. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट एंड आफ्टर देन वी कैन गेट दिस आंसर कि ये 3 है, 37 है, दिस है. वी आर गेटिंग आंसर एज 9. लिख लिया सबने? समझ में आ गया? एक और 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हमारे. हो गया. ये कर लें क्या क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन इज लाइक होमवर्क. आ जाइए. ये क्वेश्चन ऐसा था, वी नो डिविजिबिलिटी रूल्स, लेकिन फिर भी इसको लगाना इतना मुश्किल है कि इट विल किल योर 7-8 मिनट्स. देन ऑल्सो इट विल बी लाइक यार सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देर इज ए पॉसिबिलिटी कि देर कैन बी अदर आंसर ऑल्सो फॉर दिस. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन सिंपली लीव. कुछ नहीं करना है इसमें. हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं. किसी ने मैथ्स ओलंपियाड दिया है? दिया ना?
बी, डी, सी, डी, डी फॉर दिल्ली, अच्छा बी फॉर बॉय। बी आ रहा है, हाउ इट इज कमिंग बी? सो फर्स्ट इज 2 के पावर 40, सेकेंड इज 3 के पावर 21, फोर्थ इज 4 के पावर 18। इसको वी कैन सिंप्लीफाई, 4 को वी कैन राइट 2 के पावर 2 के पावर 18, तो ये क्या आ गया 2 के पावर 36, देन 8 के पावर 12, इसको वी कैन राइट 2 के पावर 3 के पावर 12, दिस इज ऑल्सो 2 के पावर 36, देन कौन सा बड़ा हो गया 2 के पावर 40, टू के पावर 40 कैनॉट बी स्मॉलेस्ट, correct, this way we can eliminate things. See these two, 4 ke power 18 and 8 ke power 12, these are same, these are same numbers, they cannot be the smallest one. If they cannot be the smallest one, they cannot be the answer. We are left with these two options. अब इसमें this 2 के power 40, 2 के power 40 is greater than these two numbers. जब ये नहीं है smallest, how become this can be the smallest number? We can reject this also. Then we are left with option B. We are left with option B. अगर ऐसा क्वेश्चन हो, सिर्फ यही लिखा हो कि 2 के पावर 40 and 3 के पावर 21, which one is the smallest number? Then कैसे will find out? लिमिट लगा के नहीं कि ए बाई बी करके, if this is the question only, these two numbers, which one is the smallest one? What we can do in these kind of cases, पावर्स ये बेस को आसपास में लेके आ सकते हैं, दैट वी कैन डू। तो ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करके देखो, नहीं उसके बाद कर सकते हैं वैसा आगे, लेकिन उसमें फिर लिमिट लगाना पड़ेगा। देन वी नीड टू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर, देन वी नीड टू चेक इट इज कमिंग मोर देन 1 और लेस देन 1, वो नहीं करेंगे वैसे। इसमें व्हाट वी कैन डू, लाइक इफ आई राइट 2 के पावर 5 के पावर 8, इसको इफ आई राइट 3 के पावर 3 7, ये कितना हो गया 32 के पावर 8, एंड दिस इज 27 के पावर 7। कैन वी कंपेयर? अब हो जाएगा कि बेस इज ऑल्सो लेस, पावर इज ऑल्सो लेस, सो दिस वे वी कैन डू सम मैनिपुलेशन कि बेसिस को नियर अबाउट करके विल ट्राई टू चेक। ठीक है, तो यहां पे आंसर हमारा वैसे एलिमिनेशन से आ गया था कि आंसर विल बी 3 के पावर 21। अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, थ्री के पावर 20, 4 के पावर 19, विच वन इज बिगर? बच गया, ठीक है। कंपेयर देन बाई डिवाइडिंग, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, कल है हमारी क्लास, मिलते हैं।